Hello everyone, I welcome you all on the behalf of Creative Edge. My name is Dipendra and here we are with this interesting video on JEE Paper 2 Mathematics. I hope you must have watched the part 1. In this video, we'll be talking more about the part B or part 2. Well, to be very honest or extensively, it is nothing but part B where we'll be discussing more about mathematics or more questions which are asked in JEE Main's Paper 2 Mathematics. So without further ado, let's get started with few questions. So here we are with our first question for the day. I hope you know the flow of this particular video. What we do is I'll throw questions, you pause the video, you try and solve the video by yourself, and then we discuss its solution together. So here's the first question for the day. I hope it's properly visible on the screen. Give it a try, all the participants, then we shall be discussing this together. You can pause the video here and try it by yourself. Now, I hope you all are able to understand what are we given in this question. If the perpendicular bisector, so here we have the perpendicular bisector, mind you everyone, the terminologies are very crucial. So perpendicular bisector of the line segment joining this point and this point has y-intercept equal to -4. Then a value of k is going to be what? Now that's a very simple and a very easy question. You all should be able to crack. What are we asked in this question? See, there is this point P which has coordinates 1, 4. There is another point which is Q, which has coordinates k, 3, right? Now, there is a perpendicular bisector of this line segment. So this is a line segment. So PQ is a line segment and PQ has a perpendicular bisector. Now, what does it mean? There is a line which is not just perpendicular on it, but it is bisecting it, which means if there is a midpoint, let's call it R for a y, then this R is nothing but the midpoint of this point P and Q, the line which is, the joints P and Q points, right? Now, what are we asked in this question? That one more thing is very clearly told that the perpendicular bisector of the line segment joining this point P and Q has y-intercept equal to -4. So we are told कि जो perpendicular bisector है, इसका y coordinate is clearly nothing but -4. I hope you are able to understand this much information, right? Now, what are we going to do further? See, the perpendicular bisector of the line segment joining the points P and Q has y-intercept equal to -4, then the value of k is asked. So the value of this particular value k is asked, right? I don't think this is that y-intercept. Now, please understand, let me reread this question. Perpendicular bisector of the line segment. So PQ is the line segment and it has a perpendicular bisector going somewhat like this. And this perpendicular bisector, which is created by joining these lines, P and Q points को join करने वाली line से जो बन रहा है, the point P is 1, 4 and the point Q is k, 3. This has y-intercept equal to -4. Then the value of k is, please understand, can I first of all figure out the value or the slope of this line PQ? I hope that's a very simple point which you all can figure out. The slope of the line PQ will be given by y2 minus y1 upon x2 minus x1, right? So that's clearly going to be nothing but what? 3 minus 4, which is -1 upon k minus 1, which is k minus 1. I hope you know when two lines are perpendicular, for example, line PQ, let me call this line L1. We know that the line PQ is perpendicular on line L1. What does it mean? I hope you know this very basic functionality that if two lines are perpendicular, then the slope of line PQ and the slope of line L1, the product of these two lines, the slope of the product of these two lines is going to be -1. On that basis, if I proceed further, can I figure out the slope of the line L1? I hope that's a very simple task to figure out. So the slope of the line L1 is going to be the negative reciprocal of the slope of PQ, which is clearly going to be nothing but k minus 1. I hope you have understood that part very clearly. Now, what do we know so far is that this is a perpendicular bisector. What does it mean? That this PQ has this bisection. So midpoint is going to be R. Well, as per our logic, the midpoint R is going to be nothing but what? 1 plus k by 2. So RK coordinate will be 1 plus k by 2 as per our logic. And the y coordinate of this R point is going to be 4 plus 3 by 2, which is 7 by 2. I hope you're realizing that. Right now, everyone pay attention. Now, what have we asked finally? The value of k. By using this basic theory, see, by using this basic theory that R is a point through which the line L1 passes. L1 line is passing through this point R. And the slope of the line L1 is k minus 1. What does it mean? Pay attention everyone. It simply means कि L1 line is point से pass हो रही है और इसकी slope है. If I know this much information, can I write the equation of line L1? I hope you all can. See everyone,
I hope you know, if you know the slope of a line which is n, and if you know that the line passes through comma x1 comma y1, then can we write the equation of the line? I hope we can. See, this is y minus y1 upon x minus x1. This is clearly equal to m, or in a better language आप लिखते हैं y minus y1 is equals to m times x minus x1. The same thing I'm going to do here. So y minus y1, y minus 7 by 2. So the equation for our line L1 is going to be y minus y1, which is y minus 7 by 2, m, which is k minus 1 times this 1 plus k by 2. So sorry, this is x minus 1 plus k by 2, that is our x1, right? I hope everyone is comfortable so far and you're able to process this much information without any hesitation or confusion, right? Now, what are we going to do is equation of perpendicular bisector we have created, right? Now, what are we asked? The value of k is what we are asked. So we are finally asked what should be the value of k. If I simplify this equation, what do I get? If I multiply this 2 there, so 2y minus 7 is equals to, I hope you are realizing there is this 2 in the denominator. I take that 2 on the other side, so 2 times k minus 1. This 2 gets multiplied here, so there's 2x minus 1 plus k. A whole expression gets divided by 2, and that 2 gets cancelled by this 2, right? Now, if you simplify this further, you can figure out, now please pay attention everyone, what are we told? That this perpendicular bisector of the line segment, which is created by joining the points P and Q, has y-intercept equal to minus 4. Now, this y-intercept, so however, wherever this line goes to, ये line अगर x axis और y axis को intercept कर रही है, तो इसका जो y intercept है, y intercept -4 होने का मतलब है कि ये point definitely, या ये line rather definitely 0, -4 से पास हो रही होगी. That is the meaning of y intercept, right? I hope you know this basic functionality. There is a straight line which goes somewhat like this. So ये हमारी intercept form होती है, right? This point is a, 0. जरूरी नहीं वो first quadrant में intercept करे, वो कहीं भी कर सकती है. And that point is 0, b. So that's exactly what we are told कि वो 0, -4 से पास होती है. So line L1 has this speciality that it passes through 0, -4. उसका जो y intercept है, that is -4. It means it passes through 0, -4. What does it mean? It means आप y की जगह -4 और x की जगह 0 पास करिए, उससे आपकी equation solve हो जाएगी और आप finally k की value निकालेंगे. The most important thing which I was trying to convey here was the very simple thing. First of all, you need to understand that questions are going to be easy. They'll be more conceptual. If you know the basics, if you have the basic idea, you would be able to solve the questions. Now, the first learning for the day is you should know that what is a slope, which you all must be aware of. You should know that the product of the slopes of two perpendicular lines is -1. You should be aware of creating or writing the equation of a line if you know that how, if you are given the slope of the equation and if you are given that through which point does the line pass, then you can or you should be able to write the equation of the line, and this is how you should be able to understand the question. One more thing, y-intercept, what does it mean? It means that y-intercept means on y-axis the line must be passing through -4, which means the coordinate through which the line must be passing is 0, -4. And when you pass this value 0, -4, जब आप ये values यहाँ pass करेंगे, x को आप 0 से replace करिए, y को -4 से, ये equation solve हो जाएगी, and you will get the answer, or you will get the value of k, and you can mark the answer accordingly. Well, the most important part of this question was figuring out how to solve the questions. And to solve the questions, you must be aware of the basics, the basic functionality, the basics of all the chapters. Please understand, पूरा पेपर टफ नहीं आने वाला है. पूरे पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो इजी होंगे. एंड दैट्स एग्जैक्टली जो मैं पार्ट 1 जो हमने इसका पहला वीडियो रिलीज किया था उसमें एम्फसाइज किया था कि आप सिलेक्शन पर ध्यान दीजिए. आप फिगर आउट करिए कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आसान है. अगर आप सारे टॉपिक्स के बेसिक्स तैयार करके जाते हैं तो जिन जिन टॉपिक से आसान क्वेश्चंस आए हैं उन्हें टारगेट करिए. So my emphasis in this video will again remain on the same thing. Selection of questions matter the most, right? Now, with that, let me bring the second question to you all. Just give me a second, all the participants. I'm bringing it in a while. So here we have the second question for the day. You just need to give me a second, all the participants. Well, with that, here is your next question. Kindly look at this question, everyone, and try to solve this by yourself. So you take a pause, take a break, and try and do it by yourself. Then we shall be discussing this question together. So give it a try, all the participants. That's a very simple question based on differentiation or differential equations rather. So differential equations, then उनके basic concepts जो ideas होते हैं, यानी कि integration के through solve करना, पहले figure out करना कि किस type की differential equation है. And if you know the basics, you should be able to get this answer. So
So I hope this question is visible to all the participants. And once you have tried, we shall be trying it together. So give it a try, all the participants. Now, if I start solving this question together, what I would recommend you to do is this expression. Take care of this expression online, students. Y log of y plus 3x, which is at base or on the base e. Now, I would recommend you to take this as this. Can we, for a while, log y plus 3x को can we take as a variable? Let's call z. Let's call it z for a while. So I've considered log of y plus 3x on base e as a variable z, right? Now, do I know, or can I simply differentiate this particular equation? When you do so, what do you get? Let me just tell you that part now. See, I hope you know the differentiation of log x is 1 upon x. So by using the chain rule, the differentiation of log of y plus 3x is going to be 1 upon y plus 3x. However, as per the chain rule, you should differentiate it further. So you are going to get, see, y ka differentiation is going to be y dash, or in a different language, I can call it dy by dx. I'm constantly reading the chat box as well, so there are no comments so far. But if you get the answer, do write your answers in the chat box. I really encourage and appreciate that. Now, the differentiation of 3x is going to be 3, and the differentiation of z with respect to x is going to be dz upon dx. I hope this much part is clearly understood by all the participants. Well, if you have understood this much basics or this much clarity, if you have gotten, can we proceed further? See, what are we given? We are given this particular equation. Let me rewrite this particular part again. See, what are we given? We are given dy by dx. I will try and highlight something for you all. Let me just put both of these equations in front of you all. Then we have y plus 3x. Pay attention, everyone. And then we have in the denominator this thing log of y plus 3x at base e, right? And then we have plus 3 is equals to 0. Now that's the equation. Now take a pause again and look at these two equations and tell me what similarity do you see from here? What can you deduce from here? Can you see some similarity here, everyone? Now, everyone, please pay attention, everyone. Can I do something from here, or can I write this equation in this particular format ताकि यहाँ से कुछ workout किया जा सके? If you are still not able to see this, let me highlight this particular part. See, we have dy by dx from here, right? एक काम करते हैं class. Let me take this y plus 3x on the other side. So when you take this y plus 3x on the other side, what do you get? See, from here, I am going to rewrite this as this particular equation I'm going to rewrite. So we have dy by dx plus 3 is equals to this thing, this y plus 3x when I'm taking on the other side. So y plus 3x times dz by dx. I hope you are seeing it. What I have done is nothing. Y plus 3x I have taken on the other side because this was in the factor form. So we have dy by dx plus 3 on the left hand side and y plus 3x times dz by dx on the other side. Well, what I am trying to tell you here is that this thing, pay attention everyone. Dy by dx plus 3. I hope you are seeing dy by dx plus 3. So this plus 3, can I replace that thing by this? I hope you are seeing that. If I rewrite this, I'm just simplifying it a little so that you can see it better. Pay attention everyone. Dy by dx plus 3, I'll be replacing by this particular expression. What do I get from here? See, this I'm putting on the right hand side. So अगर मैं इसे rewrite करूँ, so this is dy by dx. Although आप exam में इतना steps में मत लिखिए, this is I am writing so that you don't get confused and you get the answer in a more proper manner. But in the examination, don't write these many steps. Try to calculate as much as you can in your brain. ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए आसानी से, right? So this term dy by dx plus 3, this 3 and this dy by dx I'm writing here, and this thing what y plus 3x upon this particular term log of y plus 3x I'm putting on the other side. Now I hope you must have realized ये लेफ्ट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड सेम है, तो आई थिंक वी कैन कंपेयर दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड. आई होप यू कैन फाइंड सम सिमिलरिटी नाउ. व्हेन यू डू सो आई होप यू रियलाइजिंग ये वाला एक्सप्रेशन से कैंसिल हो जाएगा. एंड वन मोर थिंग वी आर गोइंग टू डू इज log of y plus 3x. We have already assumed that as z. So the question now, if I rewrite it as like this, y plus 3x, this part I'm writing right now, dz by dx is equals to this expression y plus 3x upon log of y plus 3x at base e, right? Now I hope you must have noticed it that this term gets cancelled by this term. So what do we have? Dz by dx. But on the right hand side we have 1 upon this expression is nothing but this value, right? This z. So can I rewrite it as z? So अगर आप ध्यान से देखें, so question is about to get solved क्योंकि हमने इसे बहुत हद तक सिंप्लीफाई किया है. If I take this z on the other side, this is z dz
and this is dx. I hope you know the further process. Put the sign of integration. So integration of z is z square by 2 plus c, and here it is clearly x. Now I hope आप यहाँ से सीधे सीधे z की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं. Z was nothing but this. हमसे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में बात की गई. I can replace that. तो z का वैल्यू वापस log y plus 3x I'll replace here. So log y plus 3x I'm replacing here. So log of y plus 3x, right? At base c, और इसका square divided by 2, right? Plus c is equals to x. जब आप इसे simplify करेंगे, it should match with one of the options. I'm leaving this question here, assuming कि इसका simplification करके आप answer mark कर लेंगे, right? I hope you have gotten the clarity कि इस तरह के questions को कैसे approach करना है, किस तरह से लेना है. I will again reiterate my words. ध्यान से सुनिए क्लास. क्वेश्चन बड़ा आसान सा था. डिफरेंशियल इक्वेशन वी वर गिवन. अगर आप ध्यान से चीजों को देखते हैं तो आपको यहाँ और यहाँ कुछ सिमिलैरिटी दिखती है, विच मीन्स अगर मैं थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन वाली टेक्निक यूज करने की कोशिश करूँ तो मैं इससे अगर कुछ वैल्यू असाइन करूँ, जैसे हमने से कुछ एक वेरिएबल z माना, तो इसकी हेल्प से हम कुछ फिगर आउट कर पाए दैट 1/y+3x इन दिस एक्सप्रेशन, जो कि हमें यहाँ ये दिख रहा है, राइट? ये एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू dz/dx. जब हमने हमारी ओरिजिनल गिवन इक्वेशन और हमारी अज्यूम्ड वैल्यू के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन बन रही है उन दोनों के कुछ चीजों को कंपेयर किया, so I could further simplify this into something of this sort. And I hope you know the integration of x to the power n with respect to x is clearly nothing but x to the power n plus 1 upon n plus 1 plus the integration constant. So that's exactly what I've done here. Z when integrated gives you z square by 2, and this is plus c, which is equal to x cubic dx. This is 1 which is getting integrated, and this is how you simply replace the z by the value which we assumed, or say our finally answer last time. So that's how you solve such questions. Well, I'm glad that yahan tak I hope there are no doubts and you are able to understand everything in detail. With that, let's try and solve another question, everyone. That's again a very interesting question, class, and you should be able to understand this. But again, before we try or I try this, I want you all to give it a try. All the participants kindly try and solve this by yourself. Then we shall be discussing this question together. So give it a try, all the participants. You will enjoy solving this question as well. Take your time, everyone. This is clearly a question जहाँ पे बहुत बेसिक सी फंक्शनैलिटीज यूज हो रही हैं. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. ऐसे कंसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, और ये जो चीज़ है डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी, दिस इज ऑल यू शुड बी अवेयर ऑफ. Before we discuss this question, I'd like to give you some clarity that इस एग्जाम में चीज़ें कैसे पूछी जाने वाली हैं, क्या क्या आने वाला है या क्या क्या आ सकता है. So please understand, let's get more clarity on what is going to be asked in this examination. Well, I hope you understand that मैथमेटिक्स में JEE Main B.Arch में these three topics, which three topics only students, calculus, algebra and coordinate geometry play a very crucial role. Calculus means differentiation, integration, limits, functions, continuity, differentiability, application of derivatives, area under curve, differential equations just for based on questions कर ही रहे हैं. So these are the topics which are asked from calculus. When it comes to considering algebra means a lot of questions from matrices and determinants, complex numbers, permutation and combination, probability, इनसे बहुत सारे questions पूछे जाते हैं students. Well, coordinate geometry के भी काफी सारे questions आते हैं, जैसे straight lines, circles, conic sections. So these are the major topics, major chunk जहाँ से majority of the questions are asked, and this is the area if you focus upon, if you rely upon, will help you in scoring a really good score or really good percentile in JEE Paper 2 B.Arch mathematics section. Apart from that, there are certain topics जैसे set theory, trigonometry, quadratic equations, logarithm. ये वो topics हैं जिनको definitely आप prepare करिए, तैयार करिए, क्योंकि इन concepts पर शायद directly questions ना पूछे जाएं, जैसे sequence series, but indirectly इन पर based concepts use हो रहे होंगे, जो इनके concepts हैं वो internally किसी ना किसी question में use हो रहे होंगे. So multiple concepts in a combined manner, in a merged, mingled manner are asked, and that's when you're supposed to use different concepts in a single question. So that is the learning number 2 for today. With that, let's try and solve this question, everyone. I hope you have gotten the clarity कि आप इस तरह के questions को कैसे approach करेंगे. See, we are given a function. Function को ध्यान से देखिए class. There is this thing that ये function, parts में दिया गया है. इस function की continuity और differentiability पे सवाल है, क्योंकि options को अगर आप ध्यान से पढ़ें, so continuity और differentiability is what you are asked. I hope you can see it very clearly. Now, अगर मैं चीजों को समझने की कोशिश करूं, so if I simply look at this function, see, I hope you know how to break this particular thing, this mod x thing. So if you break this function into two parts, अगर आप इसकी लिमिट को ध्यान से देखें, जो इस क्रिटिकल पॉइंट से जहाँ पे फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है, सी, आई होप यू नो, अगर mod x मुझे दिया जा रहा है दैट इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू
a, so I hope you know अगर mod x को मैं a से बड़ा चाहता हूँ, a के इक्वली ऐसे बड़ा चाहता हूँ, तो मैं हमेशा चाहूंगा कि सर x जो है वो या तो a से इक्वल या उसके बड़ा हो, और मींस यूनियन, और x should be less than equal to minus. So that's how you treat or you interpret mod x greater than equal to a. Not just that, जब आपसे कहा जाए that mod x is less than a, well in that case how do you interpret it as? You simply take सर जो x है वो minus a से a के बीच में lie करना चाहिए. So these are the two major conclusions which you must be making when you are given such information, right? Now with that, अगर आप इस question को try करें, तो first of all you should be thinking of simplifying this particular part. So अगर मैं fx को simplify करने का सोचूं, so in a simpler manner f of x would be written as pi by 4 plus tan inverse x, as long as x is less than equal to 1, which means x should be lying between -1 and 1, right? So this is first of all, ये हमारा पहला condition है. I'm just putting this thing thoda sa idhar. So this is our first condition. I hope you can see this part. Then we have another definition of this function, as long as mod x is greater than equal to 1. अब जब mod x 1 से बड़ा है तो इसकी डेफिनेशन को क्या करें, बहुत ध्यान से. मैं इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करता हूँ क्लास. सो वी हैव 1/2 mod x minus 1 I'll rewrite. पहले मैं लिखता हूँ mod x greater than 1. इसका क्या मतलब होता है क्लास, या तो x क्या हो, या तो सर x हो 1 से बड़ा. अब सोचिए क्लास, जब x 1 से बड़ा है तो mod x will be opened as it is, क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी. तो mod x minus 1 can be written as x minus 1. Similarly, जब x 1 से छोटा है, सॉरी जब x minus 1 से छोटा है, राइट, तो जब x minus 1 से छोटा है, just give me a second, I hope this is not confusing anyone. I'm just putting it थोड़ा सा right side so that it doesn't confuse you all, right? This is this equal sign and this is minus 1. I apologize for the handwriting, but I hope you are able to process and understand this particular information. Well, with that, जब x की वैल्यू -1 से छोटी है, तो जब x -1 से छोटा है तो mod x भी नेगेटिव होगा. तो इस पर्टिकुलर पार्ट को अगर मैं एक्सपांड करूं, so this will be written as 1/2 minus of x minus 1. और अगर आप माइनस साइन कॉमन लेना चाहते हैं तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो -1/2 x plus 1. So we have broken this question or expression or this whole function into 3 parts. तो अगला क्रिटिकल पॉइंट है कि सर जब -∞ से -1 तक है तब ये है, -1 से 1 तक इसकी डेफिनेशन ये है, और जब फंक्शन वहां से बड़ी वैल्यूज ऑक्यूपाई करता है x की, तो फंक्शन की डेफिनेशन ये है. विद दैट, अब अगर मैं फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे. कंटिन्यूटी के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स जहाँ पे इसके ट्रांजिशन पॉइंट्स हैं, जहाँ पे फंक्शन अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, उन पॉइंट्स में मैं चेक करूंगा कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू और उसके राइट हैंड लिमिट सेम है या नहीं. तो क्रिटिकल पॉइंट मुझे जो दिख रहा है, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन के जो पॉइंट है जहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वो जो पॉइंट्स है वो क्लियरली एक तो है -1 और एक है +1. तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे -1 पे, तो सीधे सीधे -1 रख दीजिए क्लास. जैसे ही आप -1 रखेंगे तो -1 + 1 is 0, 0 into anything is 0. So left hand limit on -1. I hope I need not write it in a very meticulous manner. You are able to process, I believe. तो जब आप इसे -1 यहाँ रखते हैं, x को जब आप -1 से रिप्लेस करते हैं, तो -1 + 1 is 0, 0 into anything is 0. So left hand limit turns out to be 0. What about the right hand limit on -1? So right hand limit जब आप -1 पे निकालेंगे, so -1 पे right hand limit यानी ये वैल्यू. So tan inverse of 1, tan inverse of 1 is pi/4. Pi/4 plus pi/4 is pi/2. So I hope you are realizing left hand limit और right hand limit equal नहीं है. और अगर ये इक्वल नहीं है, which means ये -1 पे ये फंक्शन कंटिन्यू नहीं है, और अगर कोई फंक्शन कंटिन्यू ही नहीं है तो -1 पे डिफरेंशिएबल होने का सवाल ही नहीं होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन -1 इट इज नीदर कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल. ऐसा कोई ऑप्शन आई थिंक दिख रहा होगा. सो मुझे ऐसा ऑप्शन बी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑप्शन बी में कह रहा है बोथ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल. नो, दैट्स क्लियरली नॉट पॉसिबल. ऑप्शन 1 के बारे में अभी नहीं पता. ऑप्शन 1 भी गलत ही है, क्योंकि हमने पहले तो चेक कर ही लिया कि -1 पे नहीं है. आई थिंक ऑप्शन बी सही है. रियली सॉरी, आई डिडंट रीड दैट प्रॉपर्ली. अभी तक हमारी इंफॉर्मेशन से ऑप्शन बी आंसर हो सकता है, या 3 और 4 भी हो सकता है. लेट्स चेक इट फॉर द क्लास. अगर मैं अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं इसकी 1 पर, सो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पे क्या होगी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? 1 यानी ये 1 यानी अगर मैं यहाँ पे, आई एम रियली सॉरी, आई हैव मेड अ मिस्टेक. आई एम रियली सॉरी ऑनलाइन स्टूडेंट्स. जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, आई अपोलोजाइज फॉर दैट. आई थिंक चीज़ें बदल रही हैं. मैंने डिफरेंट कंटिन्यूटी में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी. मैंने -1 के बजाय 1 रख दिया. आई अपोलोजाइज फॉर दैट. अगर आप फिर से इसे करेक्ट करेंगे, एवरीवन पे अटेंशन, जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, दिस इज द पार्ट दैट आई हैव कमिटेड द एरर. आई हैव जस्ट रियलाइज्ड इट. अगर आप -1 पर राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो राइट हैंड साइड से -1 पे आ रहे हैं, तो tan इनवर्स x की जगह आप -1 रिप्लेस करेंगे, तो pi/4 tan इनवर्स ऑफ -1, tan इनवर्स ऑफ -1 is -pi/4. So pi/4 minus pi/4 makes it 0. So yes, इसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है, यानी ये फंक्शन कंटिन्यूअस है इस पॉइंट पे, यानी -1 पे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं हो रही है.
इट इज कंटिन्यूअस, राइट। सिमिलरली अगर आप इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए बहुत आसान सा तरीका है, आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए एंड आप इसका एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, राइट। पहले क्या करते हैं, वन पे इसकी कंटिन्यूटी भी चेक कर लेते हैं। तो अभी -1 पे चेक किया, 1 पे चेक करते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पे क्या होगी, पे एडमिशन एवरीवन। इसकी अगर मैं 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं तो 1 इज दिस, ये राइट हैंड लिमिट देगा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट देगा। तो 1 यानी π/4 प्लस tan इनवर्स 1, π/4 प्लस π/4 which is π/2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज π/2। अगर मैं इसकी राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ 1 पर, तो व्हाट डज दैट टर्न आउट टू बी, this is, I replace 1 here, so 1 minus 1 0, 0 into anything is 0. So yes, what we have realized so far is that this is not continuous at 1. So it was continuous at -1, but it is not continuous at 1. If it is not continuous at 1, ये 1 पे differentiable भी नहीं होगा, right? इतनी information के basis पे what option can we think of? Obviously, continuous and differentiable on 1, no, that's definitely incorrect, क्योंकि ये तो बिल्कुल गलत है। अभी हमने चेक किया 1 पे it is neither continuous nor differentiable. ऑप्शन बी अगर देखूं, बोथ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, यस इट इज कंटिन्यूअस, नो इट इज क्लियरली कंटिन्यूअस एट -1, तो ये ऑप्शन गलत है। वो कह रहा है कि सर ये -1 पे डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस नहीं है, नो इट इज कंटिन्यूअस एट -1, ये रादर 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है। इस बेसिस पे ऑप्शन बी भी गलत है। अगर मैं ऑप्शन सी को देखूं तो वो कह रहा है वापस कि सर -1 पे कंटिन्यूअस नहीं है, नो दैट्स फॉल्स, ऑप्शन डी गलत है। मतलब मैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक किए बिना आई कैन क्लेम कि कौन सा ऑप्शन है, कौन सा आंसर सही है, राइट। With that, if I proceed further, I have gotten the clarity. Option C is going to be the correct answer. I hope you are realizing and understanding that. One more thing which can be, concluded from here is, अगर आप differentiability या differentiation check करना चाहते हैं तो differentiation के लिए ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा है। आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिख लीजिए, मतलब ये f of x है, आप f dash x लिख लीजिए। अगर पूछा जाता, अगर और स्पेसिफिक आंसर वो मांग रहे होते तो आप इसे कैसे सॉल्व करते, that's what we are going to discuss here. So f dash x के लिए π/4 will remain as it is, tan inverse x का आप differentiation लिख सकते हैं 1/1 plus x square, and this limit again remains same 1 से x तक और ये 1 तक। Let me just turn the comments on because this phone got off. So I think we are running live and you are seeing these videos. So whatever queries or concerns you have, unhesitatingly feel free to put your comments or queries in the chat. So this is how you define tan inverse x, right? This differentiation is going to be 1/2, x का differentiation 1, this is 0, so this is 1/2. यहाँ पे जब differentiation करेंगे तो -1/2 constant, x का differentiation 1, so this is -1/2. So this is the derivative जब तक x की वैल्यू 1 से बड़ी है ये, जब तक x की वैल्यू -1 से छोटी है ये। अगेन आपको डिफरेंशिएबिलिटी भी अगर चेक करनी होती तो आप पहले सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले लीजिए। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब आप लेंगे -1 पे, तो -1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी ये होता -1/2, ये क्लियरली दिख रहा है। अगर मैं राइट हैंड डेरिवेटिव निकालता -1 पे, तो -1 पे राइट हैंड डेरिवेटिव यानी ये, अब डेरिवेटिव ऑलरेडी ले चुके हैं, आप सिर्फ वैल्यू रखिए, तो 1/1 + 1 -1 का स्क्वायर इज, तो दैट इज 1/2। सो ऑब्वियसली -1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। आई होप यू आर सीइंग दैट, राइट। अगर इसका let me just recheck, -1 पे it is -1/2 और ये 1 पे -1 पे it is 1/2, so yes it is not differentiable on -1। अगर मैं इसका राइट हैंड डेरिवेटिव +1 पे चेक करूँ, सो राइट हैंड डेरिवेटिव +1 पे चेक करें, सो +1 पे राइट हैंड डेरिवेटिव, तो इट इज 1/2। एंड आई होप आई नीड नॉट टेल यू कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर मैं +1 पे चेक करूँ, +1 यानी कि 1 से लेफ्ट हैंड साइड से आया इधर, तो ये हुआ 1/2, तो हाँ ये 1 पर डिफरेंशिएबल है। आई होप यू आर गेटिंग दैट। So with that, you could have checked or assessed किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और आंसर लाना है, right? I hope we have done everything right and we are marking the option correctly. So with that, let's proceed further and let's see some more questions and let's get more clarity कि questions को कैसे approach करना है और solve करना है, right? Let me just re-verify, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया इस क्वेश्चन में। I'm just ensuring that whether I have taught something incorrectly or not, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, I'm just cross checking everything. So left hand derivative on -1, so -1 पे left hand derivative यहाँ से tan minus π/4 which is tan -1, tan inverse of -1 which is -π/4, तो ये 0 हो जाता है। right hand limit on -1, so ये हो जाएगा, I'm really sorry, right hand limit on -1, no, this was the right hand limit, I'm really sorry, जो कि 0 थी, और ये थी left hand limit जो कि -1 + 1 0 थी, right? Similarly left hand limit 1 पे अगर देखते तो 1 पे left hand limit यानी 1 से छोटी वैल्यू से, तो ये हो जाता tan inverse 1 यानी π/4 + π/4 is π/2। अगर राइट हैंड लिमिट 1 पर देखते तो 1 से बड़ी वैल्यू से, तो हो जाता 1 - 1 यानी 0। माय कंसर्न इज अगर ये 1 पे कंटीन्यूअस नहीं है, इफ इट इज नॉट कंटीन्यूअस 1, तो हम क्लेम कर सकते हैं 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बट यहाँ पे डिफरेंशिएबल क्यों आ रहा है, दैट्स द ट्रिकी पार्ट। लेट मी जस्ट रीचेक, क्योंकि दिस इज व्हाट इज बॉदरिंग मी हियर थोड़ा सा।
और हम ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं, हाँ ये इट इज परफेक्टली फाइन, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पे, सो इट इज नॉट नेसेसरली ट्रू कि वो डिफरेंशिएबल भी होगा। तो माइनस पे अगर वो डिफरेंशिएबल नहीं है, दैट्स फाइन। बट द कॉन्ट्रडिक्टरी पार्ट हियर इज दिस कि डिस्पाइट बीइंग continuous on -1, +1, it is turning out to be differentiable. But I hope you know the basic condition for a function to be differentiable is कि पहली बात तो कंटिन्यू होना चाहिए। तो अगर वो वहाँ पे कंटिन्यूस ही नहीं है तो उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना डज नॉट मेक एनी सेंस। आई होप यू आर रियलाइजिंग दैट। स्टिल एक बार और चेक कर लेते हैं, अगर कुछ हम गड़बड़ कर रहे हैं तो हम वहाँ पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें। सो π/4 + tan इनवर्स x, π/4 का डिफरेंशिएशन 0, tan इनवर्स x is 1/1 + x², राइट? 1/2 का डिफरेंशिएशन इज 1/2 x - 1, राइट? 1/2 दिस इज -1/2। अगर मैं -1 पे चेक कर रहा था तो एक वाला लाइन ही रही। तो -1 पे अगर हम चेक कर लें एक बार और, तो -1 की लेफ्ट हैंड लिमिट वुड बी, यहाँ से चेक करना तो दिस इज -1/2 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव रहा था। और -1 पे अगर राइट हैंड डेरिवेटिव चेक किया तो यहाँ से चेक करेंगे तो ये -1 यानी 1/2। तो ऑब्वियसली ये कंटिन्यूस होने के बाद भी डिफरेंशिएबल नहीं है। बट अगर इसका राइट हैंड डेरिवेटिव 1 पे और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 पे चेक करता तो राइट हैंड डेरिवेटिव 1 पे यानी आप 1 के राइट हैंड साइड से जाइए तो 1 के राइट हैंड साइड से जाना है, यानी ये तो ये हुआ 1/2। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर देखें तो 1 पे लेफ्ट हैंड साइड से जाइए तो भी हुआ 1/2। तो हाँ ठीक है, मतलब दिस पार्ट इज लिटिल ट्रिकी एंड आई एम नॉट पुटिंग एनी सिंसियर कमेंट हियर, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि अगर वो कंटिन्यूअस ही नहीं था तो उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना डज नॉट मेक एनी सेंस, राइट? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि वो कंटिन्यूअस ही नहीं है तो उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना डज नॉट मेक एनी सेंस, राइट? नाउ बेसिकली जब वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो वहाँ पे वो एक ऐसा सिंगल पॉइंट या डिसकंटिन्यू हो रहा है तो वहाँ पे इनफाइनाइट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, सो उसकी डिफरेंशिएबिलिटी इज नॉट यूनिकली डिफाइंड एंड दैट्स व्हाई अगर फंक्शन कंटिन्यू नहीं होता है तो उसकी डिफरेंशिएबिलिटी उस पॉइंट पे उस जोन में डिफाइन नहीं की जा सकती, राइट? With that, let me give you another question and let's see how do you perceive and solve such questions. As I have already mentioned कि आपको अलग-अलग टॉपिक से अलग-अलग तरह के क्वेश्चंस आएंगे, जैसे this is a question which is based on sequence and series. So I can request you all to take a pause and give this question a try by yourself. I hope you all must have seen this question and let's try and solve this together. But again, take your time, read it properly, and then we shall be discussing it together. So I hope by looking at this, you must be getting the idea कि क्वेश्चन किस टॉपिक पर बेस्ड है, इस टॉपिक में कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं। So I hope you realizing कि आपको काफी कुछ पढ़ना है, काफी कुछ याद रखना है, काफी कुछ मेमोराइज करना है। And the best idea to memorize things is repeat. Kindly keep repeating things constantly. और रिपीटेशन इज द की। तो रिपीटेशन के लिए प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस, आपको सारे फॉर्मूले बाय हार्ट हो जाएंगे। दैट्स द बेसिक आइडिया। नाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विल यूज द वेरी सिंपल टेक्निक। आई होप यू आर सीइंग बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई। सो लेट्स यूटिलाइज ऑल द डेटा एंड लेट्स फिगर आउट कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं, राइट? नाउ A1, A2, AN, दिस इज बेसिकली एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स हैं जिनका कॉमन डिफरेंस इज एन इंटीजर। और एक और बात कह रहा है कि एसएन एक टर्म है जो कि सम ऑफ एन टर्म से A1 A2 से लेके AN तक। एक काफी क्रूशियल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि A1 जो है यानी फर्स्ट टर्म उसने डिफाइन की है, फर्स्ट टर्म इज 1 एंड AN इज 300। नाउ एक और बात कह रहा है वो कि n जो है वो 15 से 50 के बीच में लाया करता है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जो है 15 से 50 के बीच में कहीं ना कहीं होंगी। तो आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू s of n-4 and a of n-4. I hope you're realizing the question is pretty simple. First of all, try on working the number of terms first and then figure out the number of the common difference. अगर आप ये figure out कर लेते हैं तो you can very easily crack the answer. I would tell you that you should go for this thing कि आप ये वाला formula use करें. I hope you know the nth term of NAP is given by first term plus number of terms minus 1 common difference. This is how you write the nth term of an AP. And when you use this particular formula, ये 300 मतलब nth term है कोई सी, I don't know कौन सी term, first term हमें दी गई है which is 1, so I'll use this one here, plus n minus 1 into d, that's what I don't know, right? Now 300 में से 1 subtract किया, so that is 299 is equals to n minus 1 into d. अब अगर आप 299 को देखें, so obviously यहाँ पे एक ही इक्वेशन है और यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, so ये क्रैक करना थोड़ा मुश्किल है कि एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। बट अगर आपने ये वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ से देखी होती, दिस कि n की जो वैल्यू है 15 से 50 के बीच लाई करती है, दैट माइट हेल्प अ लिटिल एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू यूटिलाइज। मैं एक काम करता हूँ, मैं 299 को फैक्टराइज करता हूँ। 299 को जब आप फैक्टराइज करेंगे यू रियलाइज कि चीजें सॉल्व हो सकती हैं। 299 को डिवाइड करते हैं, राइट? तो 299 ऑड है, 5 3 3 से 18 प्लस 2 20 नहीं हो रहा है,
6 से सवाल नहीं उठता, 7 से हो सकता है क्या? 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 9 से ऑब्वियसली सवाल नहीं उठता है, 11 से आई डोंट थिंक नहीं हो रहा है, 11 से 13 से डिवाइड करते हैं, 12 से भी नहीं होगा मोस्टली। 13 से अगर डिवाइड करता हूँ तो 13 का डबल, सो 13 इंटू 13 का डबल इज 26, रिमाइंडर इज 3, 13 का 3 टाइम्स इज 39, सो यस दोनों प्राइम फैक्टर्स हैं 13 एंड 29, राइट? सो दीज आर द टू प्राइम फैक्टर्स 13 and 29. On that basis, I can say 299 can be written like this. और राइट हैंड साइड पे आई हैव दीज नंबर्स हैं -1 एंड d। अगर मैं चीजें वर्कआउट करने की कोशिश करूँ तो n की वैल्यू 15 से 50 के बीच में, अगर मैं n की वैल्यू 14 ले लेता प्लीज पे अटेंशन, तो ये 13 हो जाता, बट n की वैल्यू 14 नहीं हो सकती क्योंकि n की मिनिमम वैल्यू 15 है। तो आई होप यू आर रियलाइजिंग n की वैल्यू 15 से जब 50 के बीच में है तो ये 13 कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ n माइनस 1। आई होप ये कंपैरिजन आपको समझ आ रहा है। सो क्लियरली n-1 की वैल्यू 23 होगी और d की वैल्यू 13 होगी, राइट? सो n-1 की वैल्यू अगर 23 है तो n की वैल्यू फिगर आउट करना आई होप इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। आई होप यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हमने कंपैरिजन कैसे किया। लेट मी रीइटरेट, इन दोनों में से एक एक वैल्यू मुझे असाइन करनी कि एक फैक्टर 13 होगा और एक फैक्टर 23 होगा, बट ये कैसे फिगर आउट करें कि कौन सा क्या है? अगर मैं n-1 को थोड़ी देर के लिए 13 मान तो n की वैल्यू आती है 14, और n की वैल्यू 14 आ जाने से यहाँ पे हम कंडीशन वायलेट कर रहे हैं कि n 15 से 50 के बीच में, दैट्स व्हाई मैं n-1 की वैल्यू 23 और d की वैल्यू 13 ले रहा हूँ। एंड व्हेन यू हैव गॉटन दैट यू कैन वेरी इजीली फिगर आउट व्हाट शुड बी द आंसर। आई होप यहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व करना इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। आपसे s ऑफ n-4 और a ऑफ n-4 पूछा है। अगर मैं a ऑफ n-4 की बात करूँ तो a ऑफ n-4 नंबर ऑफ टर्म्स 24, तो n-4 इज 20, तो आपसे 20th टर्म पूछिए, और s ऑफ n-4 यानी 20 टर्म्स तक का सम पूछा है। सो फर्स्ट 20 टर्म्स का सम, आई होप किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में n टर्म्स का सम इज गिवन बाय n/2 a प्लस l, मतलब फर्स्ट टर्म वो nth टर्म यानी लास्ट टर्म टाइम्स n/2। या फिर इसी फॉर्मूले को एक और अलग तरीके से लिखने का तरीका है, अगर आप l यानी लास्ट टर्म की वैल्यू से रिप्लेस कर दें तो इट इज n/2 a plus n-1 into d, there is 2a plus n-1 times d. This is also how you could have figured out the answer, right? Now when you replace that value, a20 निकालना काफी आसान है, a यानी 1 plus n-1, so n-1 is clearly, abhi n is 20, so 20 minus 1 is 90 into d. What is d here? D is clearly 30, so that should be your value of 28th term, which you can very easily figure out by doing this calculation. S20 should be n/2, so 20/2 times 2a, so 1 का डबल is 2 plus n-1 into d, n-1 into d, आप a20 रख देते तो भी आंसर आ जाता, बट फिर भी n-1 into d, n-1 into 90 into d, so that is going to be your answer. ये जो भी values आएंगी, s20 will be this value and a20 will be this value, and you can figure that out very easily, I believe, and that's how you can crack this question, right? I hope you're realizing questions are going to be very simple and you would be able to solve. जैसे इस क्वेश्चन में बहुत बेसिक सी फंक्शनैलिटी यूज हुई है सीक्वेंस एंड सीरीज की। अगर मैं और कुछ फॉर्मूले डिस्कस करूँ सीक्वेंस एंड सीरीज के, दे आर क्वाइट सिंपल। जैसे अगर मैं एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करूँ तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सिंपल सा सीक्वेंस फॉलो होता है a r स्क्वायर एंड दिस गोज ऑन। तो अगर मैं nth टर्म की बात करूँ तो दैट शुड बी a r टू द पावर n-1, जैसा AP में होता है वैसे n-1 में होता है, बट यहाँ पे कॉमन रेशियो होता है। अगर मैं इसके n टर्म्स के सम की बात करूँ, सो दैट इज a r to the power n minus 1 upon r minus 1. This is how we define n terms का sum. Apart from that, अगर ये infinite GP मतलब इसका common ratio -1 से 1 के बीच लाई करता है, तो उस केस में डिक्रीजिंग GP होगी जिसकी हर वैल्यू छोटी 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 होती चली जाएगी। तो उस infinite GP की infinite terms तक का सम निकाला जा सकता है by using this very basic formula 1 minus r, a upon 1 minus r. Well, there is one more property which you all should be very clearly aware of, that geometric mean हमेशा geometric mean, arithmetic mean और harmonic mean में हमेशा एक relation होता है. That relation I hope you will find in your book. So this particular relation I am not revealing here, and I am describing or giving you it as an assignment, and you figure it out by yourself. Why am I giving you this as an assignment? Because when you do that by yourself, you will realize that this is such a formula which is very frequently asked in this examination. इस फॉर्मूले पर बेस्ड काफी सारे एप्लीकेशंस आर वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज फॉर्मूले। ये कुछ ऐसे छोटे छोटे माइन्यूट सी डिटेल्स हैं जिनको बहुत सटली दे आस्क, बहुत बहुत बारीकी में वो पूछते हैं और इनको सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, राइट? यू डू इट बाय योरसेल्फ एंड यू विल रियलाइज कि इस पे कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। यू विल एनकाउंटर सच क्वेश्चंस अगर आप कुछ पास्ट ईयर्स के पेपर सॉल्व करते हैं। दैट्स द बेसिक आइडिया। विद दैट आई एम गिविंग यू अनदर क्वेश्चन. So here on the screen you have another question. Give it a try, all the participants. I hope you must have realized this is the question which is from 3D, or rather I would say straight lines. 3D मतलब 3D geometry से, और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है जहाँ पे लाइन है, जहाँ पर प्लेन है,
और जिस फॉर्मूले की मैं आपसे बात कर रहा था, ज्योमेट्रिक मीन अरिथमेटिक मीन के बीच के रिलेशन की, उस फॉर्मूले पर बेस्ड एप्लीकेशन हम अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तब तक आई एम रिक्वेस्टिंग और एडवाइजिंग कि आप अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच में क्या रिलेशन होता है उसका फॉर्मूला फिगर आउट करें। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको यही नहीं पता है कि ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन क्या होता है, तो हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। अगर मेरे पास n टर्म्स हैं a1 a2 a3, जरूरी नहीं है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, आई हैव जस्ट n टर्म्स a1 a2 a3 a4। तो इन n टर्म्स का ज्योमेट्रिक मीन इज नथिंग बट इन सारी टर्म्स का प्रोडक्ट a1 a2 a3 से लेके an तक, और इन सारी टर्म्स के प्रोडक्ट का nth रूट, यानी अगर दो टर्म्स है तो a1 into a2 का सेकंड रूट स्क्वायर रूट, तीन टर्म्स है तो a1 a2 a3 का थर्ड रूट क्यूब रूट। इस तरीके से आप ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। अरिथमेटिक मीन इज नथिंग बट a1 plus a2 plus a3, इट्स लाइक एवरेज जो आप निकालते हैं। सो इन सारी टर्म्स का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज अरिथमेटिक मीन। सो यू नो द बेसिक्स। हार्मोनिक मीन आप सीखिए, खुद से निकालिए और फॉर्मूला रखिए अपने साथ। So geometric mean, arithmetic mean और harmonic mean के बीच there is this relation. If you use that, you will be able to write the answer. So with that, I am showing the next question. Give this question a try. Then we shall be discussing this question together. So take your time and give it a try, all the participants. Well, if you all have tried the question, let's discuss this question together. See, the distance of point 1, comma minus 2, comma 3 from this plane x minus y plus z is equals to 5 measured parallel to this line. Now that's a very, very interesting question. See, first of all, let me explain the whole scenario to you. See, there is this plane, right? And from this plane, there is this point, which is 1, comma minus 2, comma 3. So they are not asking you the perpendicular distance of this plane from this point. Had this been asked, you would have been able to answer this question quite easily. Why? Because किसी भी point से किसी plane की perpendicular distance का formula, I hope you know. Let's say there is point x1, comma y1, you know, comma z1. ये एक point है और there is this plane. This plane के coordinates are, you know, this equation is ax plus by plus cz plus d is equals to 0. आई होप यू नो, इस पॉइंट से इस प्लेन पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, जैसे आपने कोऑर्डिनेट में सीखा है, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइडेड बाय अंडर रूट ओवर द कोफिशिएंट्स a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर का सम। और ऑब्वियसली ये डिस्टेंस है तो इसमें मॉड लगा लीजिए, कहीं साइन नेगेटिव आता है तो टेक द मैग्नीट्यूड ओनली। So this is how you define the perpendicular distance. However, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट से इस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पूछी, इस पॉइंट से इस प्लेन की इस लाइन के अलोंग इक्वेशन पूछी। मान लो ये लाइन कुछ ऐसी सी जा रही है, let me just draw it differently. Imagine this line is going somewhat like this. So this is this line. Which line? X by 2 is equals to y by 3 is equals to z by minus 6. So this is that line. इस लाइन के अलोंग जाने का मतलब है कि इस पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ करिए। आई एम जस्ट रीड्राइंग इट, ये सेकंड में। और इस लाइन के पैरेलल आप ड्रॉ करें तो वो लाइन इस लाइन के जब पैरेलल गई इस पॉइंट से, तो वो लाइन इस प्लेन को जहां इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस, लेट मी कॉल दिस पॉइंट P, और अगर वो पैरेलल ड्रॉ करे तो लेट्स कॉल दैट पॉइंट Q। सो वो ये PQ डिस्टेंस पूछ रहा है, वो ये PR डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? नाउ if you have gotten the clarity on the question, how do you solve or how do you approach this question? That's a very interesting part. Now, do you know if lines are parallel, उनके direction ratios will remain proportional? I repeat my statement. अगर ये line PQ और हमारी given line L1, अगर ये दोनों parallel हैं, तो इनके direction ratios, यानी ये direction ratios है, I hope you understand. I hope you know, अगर एक line, I hope you know this, अगर एक line है जो अल्फा, बीटा और गामा से पास होती है और इसके डायरेक्शन रेशियोज आर, लेट्स से मैं डायरेक्शन कोसाइन लिख दे रहा हूं, इट डज नॉट मैटर, वो सिंपलीफाई हुए डायरेक्शन रेशियो में कन्वर्ट हो जाता है। सो अल्फा, बीटा, गामा से पास होती है और ये उसके डायरेक्शन कोसाइंस, जिन्हें आप डायरेक्शन रेशियोज भी बना सकते हो। सो इसकी इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन इज गिवन बाय x माइनस अल्फा अपॉन l इज इक्वल्स टू y माइनस बीटा अपॉन n इज इक्वल्स टू z माइनस गामा अपॉन n। दिस इज हाउ यू राइट दिस इक्वेशन, राइट? अगर मैं इसी बात को यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करूँ, यानी अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को लिखने की कोशिश करूँ, इस स्ट्रेट लाइन की खास बात ये है कि ये P से पास हो रहा है और ये स्ट्रेट लाइन L1 के पैरेलल है, मतलब उस स्ट्रेट लाइन के, हमारी PQ स्ट्रेट लाइन के भी डायरेक्शन रेशियोज will be in this proportion. What proportion? 2, 3 and minus 6. So can I write the equation of line PQ? Yes, we all can. The equation of line PQ is going to be x minus x1, x minus alpha, which is x minus 1 अपॉन द डायरेक्शन रेशियो, क्योंकि इसके पैरेलल है L1 के, तो यही डायरेक्शन रेशियो यहाँ भी यूज हो सकता है, y minus y1, so y minus minus 2 which is y plus 2 divided by the common
the proportional direction ratio, which is 3, is equals to z minus z1, which is 3 upon this common, direction ratio, which is proportional to this line, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल है. Now, I hope you know, अगर इस लाइन की मैंने इक्वेशन फिगर आउट कर ली तो इस लाइन पे लाई करने वाले किसी भी रैंडम पॉइंट को मैं जनरलाइज कर सकता हूँ. सो आई होप जैसा आपने बचपन में अपने 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में सीखा है, इफ यू पुट इट इक्वल टू लैम्डा, आप यहाँ से x, y और z को डिफाइन कर सकते हो. तो यहाँ से अगर मैं इस पे लाई करने वाले किसी भी रैंडम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालूं तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी 2 into लैम्डा plus 1. I hope you are seeing that. Y coordinate will be 3 lambda minus 2 and Z coordinate will be minus 6 lambda plus 3. That's how you figure it out, right? Now, ये वैल्यू जब आप यहाँ रिप्लेस करेंगे, सो मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए that these are the coordinates of nothing but this Q. और अगर ये Q के कोऑर्डिनेट हैं तो अब बहुत जरूरी बात हमारे सामने आती है कि सर Q पॉइंट तो प्लेन पर लाई करता है और प्लेन इज x minus y plus z is equals to 5. यानी कैन आई से अगर ये पॉइंट Q इस प्लेन पर लाई करता है तो पॉइंट Q प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. यानी 2 lambda plus 1 here, 3 lambda minus 2 here, and 6 minus 6 lambda plus 3 here is equals to 5. Should give me the value of lambda basically. So 2 lambda plus 1 here I'm replacing minus 3 lambda minus 2, so that is 3 lambda plus 2 plus that यानी minus 6 lambda plus 3 is equals to 5. और अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ से मुझे lambda की वैल्यू मिल जाएगी. So this is minus 3 lambda minus 6 lambda minus 9 lambda minus 9 lambda plus 2 lambda is minus 7 lambda, right? 1 plus 2 is 3, 3 plus 3 is 6, 5 से उधर जब 6 गया तो that is minus 1. तो लैम्डा की वैल्यू जो निकल के आती है that is 1/7. I hope अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है. Why am I saying that? क्योंकि जैसे ही आप लैम्डा की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करेंगे तो आपको Q कोऑर्डिनेट मिल जाएगा. लैम्डा की वैल्यू यहाँ और यहाँ रखिए तो विल गेट द Q कोऑर्डिनेट. और जैसे ही Q कोऑर्डिनेट मिलता है you have the points P, you have the coordinates of point Q. Or I hope by using this very basic distance formula, you can figure out the answer. If you are still not able to understand, let's say point P is x1, y1, z1, point Q is x2, y2, and z2. तो मैं point P और Q के बीच की distance is given by under root over, I hope you know this very basic formula, x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square plus z1 minus z2 whole square, and that's how you will figure out the distance between point P and Q. If I reiterate my words, what I have tried teaching you in this particular example or question, सबसे पहले एक लाइन दी गई थी, पॉइंट दिया गया था, जिससे इस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, इस एक अलग गिवन लाइन के अलोंग हमें डिस्टेंस पूछी गई थी. यानी कि प्लेन से इस लाइन की जो डिस्टेंस होगी, इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी, वो लाइन और ये लाइन के दोनों के डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे. और ये लाइन PQ इस पॉइंट से पास हो रही थी तो मैं PQ लाइन की इक्वेशन लिख पाया और उसको लैम्डा के इक्वल रख के मैंने रैंडम PQ लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डिफाइन किए. एंड इफ आई कुड डू दैट, मैंने इस Q कोऑर्डिनेट को, चूंकि मैं जानता था दैट दिस Q कोऑर्डिनेट लाइज ऑन दिस प्लेन, तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा और वहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल के Q के कोऑर्डिनेट फिगर आउट कर चुके हैं. एंड इफ वी हैव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, आई होप आई नीड नॉट टेल यू, हम PQ के डिस्टेंस फार्मूला से लेंथ फिगर आउट कर सकते हैं. दैट वुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन. I hope you're realizing questions are very simple and they are understandable. So अगर आपको basics पता है, believe me, आप JEE Main paper 2 B.Arch का math section बहुत easily crack कर सकते हैं. That's my whole idea behind this particular thing. Well, let's proceed towards the next question, which is based on the property which you have been just taught in the question previous to this question. So again, look at this question and try to do it by yourself. Then we shall be discussing this question together. So give it a try, all the participants. Here the question it is for you, everyone. Give it a try. That's a very interesting question. Before we discuss this question, let me reveal two very important properties which would be required to solve this question. First of all, arithmetic progression or arithmetic mean, rather to be very precise, is always greater than equal to geometric mean. अगर आप कुछ random numbers लें तो उनका अगर आप arithmetic mean निकालें तो उन्हीं numbers के geometric mean से हमेशा बड़ा होता है. Apart from that, I hope you know this very basic property. अगर आपको दो वैल्यू दे दी जाए a sin theta प्लस b cos थीटा, मतलब एक एक्सप्रेशन दे दिया जाए. अब एक चीज यहाँ पे फिक्स होनी चाहिए कि सर जो थीटा है वो सेम होना चाहिए. तो a cos थीटा और b sin थीटा, उल्टा भी हो सकता है, a sin थीटा और b cos थीटा, एंड b आर जस्ट वैल्यूज. ये वैल्यू सर हमेशा लाई करती है दो करस्पॉन्डिंग, दो फिक्स्ड वैल्यूज के बीच में. आप हमेशा इस प्रॉपर्टी को याद रखिए. दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल प्रॉपर्टी. सो दैट वैल्यू ऑलवेज लाइज बिटवीन अंडर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस से, मतलब नेगेटिव ऑफ अंडर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेकर अंडर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. So this is the range between this expression's value will always lie. और अगर आप इस पर्टिकुलर दो चीजों को यूज कर पा रहे हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान है.
As I have already told you, ये बहुत सटल सा कॉन्सेप्ट है जिसपे बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं. क्वेश्चन भी उसी पर बेस्ड है. So if you know this concept, you will be able to apply this here and get the answer. So मैं एक काम करता हूँ, मैं दो टर्म्स ले लेता हूँ, 2 sin x plus 2 cos. I'm using this property. तो दो टर्म्स है मेरे पास, कौन कौन सी? 2 sin x and 2 to the power cos x. I'm really sorry, this is to the power sin x. इन दोनों टर्म्स का अरिथमेटिक मीन क्या होगा हमारे स्टूडेंट्स? अरिथमेटिक मीन will be 2 to the power sin x plus 2 to the power cos x divided by 2. Why am I dividing it by 2? Because these are the two terms. So in दोनों terms का arithmetic mean is number of terms divided by sum of the terms divided by number of terms is greater than equal to the geometric mean. Geometric mean यानी इन दोनों terms का product. So 2 to the power sin x into 2 to the power cos x. और चूंकि ये दो terms हैं तो इनका second root यानी इनकी power 1 by 2. That's the inequality which we'll be using here. Arithmetic mean is always greater than equal to geometric mean. Now if you do so, or if you use that, what do you get finally? Pay attention everyone. This denominator wala 2 I'm taking there. So this is what we have, 2 to the power sin x plus 2 to the power cos x. And that's exactly what we are trying to get. Is greater than equal to 2 times something. और आप समझिए हमसे इसकी मिनिमम वैल्यू पूछेगी. मिनिमम वैल्यू मतलब क्या? इस एक्सप्रेशन की हमेशा वैल्यू इससे राइट हैंड साइड पे जो भी हम लिखेंगे उससे हमेशा ज्यादा होती है. मतलब इस एक्सप्रेशन का जो मैक्सिमम होगा वही इसकी लेफ्ट हैंड साइड की मिनिमम होगा. If I am confusing you, let me solve the question first. Then in the end, I'll tell you what I'm trying to convey here. See, 2 to the power sin x plus 2 to the power cos x is always greater than equal to 2 to the power. See, this 2 to the power sin x to the power cos x. I hope you know this basic property that a to the power n into a to the power n is a to the power n plus n. Basics, right? So this is 2 to the power sin x dot 2 to the power cos x. Can I write that as 2 to the power sin x plus cos x to the power 1 by 2? I repeat my words. मुझे इस एक्सप्रेशन की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू पूछ रही है. मैं कह रहा हूं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये सर हमेशा इससे तो बड़ा है, इस एक्सप्रेशन से तो हमेशा बड़ा है. व्हाट डज इट मीन? कि सर इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू वो होगी जो ये राइट हैंड साइड वाले गिवन एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू होगी. क्योंकि ये जो ज्यादा से ज्यादा हो सकता है वो ये कम से कम हो सकता है. तो इसका जो मैक्सिमम होगा वो इसका मिनिमम होगा. और इसका मैक्सिमम निकाल लेंगे बिना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यूज किए. सिंपल मैक्सिमम वाला कांसेप्ट हम ये प्रॉपर्टी यूज करके इसका मैक्सिमम फिगर आउट कर सकते हैं. Now what do I mean by that? That's a very simple question. Pay attention everyone. See, this is what I'm going to solve. So we have 2 times 2 to the power sin x plus cos x whole raised to the power 1 by 2. And we have just discussed ये जो expression है ये sin x plus cos x का मिनिमा क्या होता है, उसका मैक्सिमा क्या होता है. तो अगर मैं इसे 1 sin x plus 1 cos x की तरह ट्रीट करूं तो 2 times 2 to the power 1. I hope you know ये बेसिक प्रॉपर्टी a sin x plus b cos x a square plus b square minus ये मिनिमा है और ये मैक्सिमा है. वी आर इंटरेस्टेड इन मैक्सिमा. तो 1 sin x plus 1 cos x, तो 1 का स्क्वायर इज 1 plus 1 का स्क्वायर इज 1 inside and under root whole raised to the power 1 by 2. So that will be the maximum value of this expression. So maximum value of this expression would be this. और अगर मैं इसे further solve करूं, so what do we get now? See, this is 2 dot 2 to the power. What is this? This is under root 2, so this is 1 upon 2 root 2. I hope इस ये power 1 है. आप इसे simplify कर लीजिए, rationalize कर लीजिए power को, and finally this would match with one of the given options. So that's how we get the answer to this question, right? I think you have understood the question and gotten a lot of clarity in this particular chapter. The only point I'm trying to make you understand in this particular chapter is that, first of all, another chapter is all the basics that you have learned in this particular video is that always remember, select the easiest questions. Go for the easiest questions. Well, we'll be coming, live on 14th of April as well. In that video, I'll be discussing some more topics. I'm just trying to cover all the topics from mathematics and just trying to give you the idea. If topics आसान, questions आसान, you know the basics. So few questions we have discussed in part 1. Remaining questions I have tried to discuss in part 2. Well, on 14th of April, at the same time possibly, we'll be discussing some more remaining questions in part 3. With that, I hope you have learned a lot in this lecture. Thank you so much. Take care everyone.